Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Rimjim Kinsaria. I hope you are all healthy and safe. Today we are going to begin with the poem Ulysses by Alfred Lord Tennyson. And before beginning with the poem, I'll give a short introduction to Alfred Lord Tennyson. So let's get started. Alfred Lord Tennyson was one of the major poets of the Victorian era. In Memoriam is considered as the masterpiece of Tennyson. In Memoriam जो है वो कंसिडर की जाती है एज अ मास्टरपीस. मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है इन मेमोरियम को एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के. ही रोट द पोम यूलिसीज आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम. स्पेलिंग लिख लीजिए अब, ARTHUR आर्थर, हेनरी HENRY हेनरी, हैलम HALLAM. ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. और एक चीज और आप नोट कर लीजिए, एज टेनिसन बिलोंग टू विक्टोरियन एज, दिस एज इज जनरली कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रोग्रेसिव एज. ही इवन यूज टू कंसिडर द वॉइस ऑफ द इंग्लैंड. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे यूलिसीज पोम जो है. बिफोर बिगनिंग विद द एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द critical appreciation of the poem, I'll give a recite to the poem. So let's begin. Ulysses. So the poem goes as, it little profits than an idle king by this still hearth among these barren crags, matched with an aged wife I met and dole unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. I cannot rest from travel, will drink life to the lees. All times I have enjoyed, greatly have suffered, greatly both with those that loved me, and alone on shore went through scudding drifts the rainy heights, weary the dim sea. I become a name for always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all, and drunk delight of battle with my peers, far on the ringing plains of windy Troy. I am a part of all that I have met, yet all experience is an arch where through gleams that untravelled world, whose margin fades forever and forever when I move. How dull it is to pause to make an end, to rust unburnished, not to shine in hues, as though to breathe were life. Life piled on life were all too little, and of one to me little remains, but every hour is saved from that eternal silence, something more, a bringer of new things, and while it were for some 3 suns to store and hoard myself, and this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. ये पोम जो है मैंने सिर्फ यहाँ तक रीड की है, इसके आगे भी है पोम, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी के लिए आज के लेक्चर में हम ये जहाँ तक मैंने रीड की है, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, यहाँ तक जो है मैंने रीड कर दी है. और अब अपन क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखेंगे, फिर हम जो नेक्स्ट पैरा है उससे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, रेस्ट ऑफ द पोएम वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. सो let's have a look on the critical appreciation of the poem. यूलिसीज की मैं अगर बात करूं सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि यूलिसीज इज द रोमन नेम फॉर अडीसियस. स्पेलिंग लिख लीजिए आप अडीसियस की, ODYSSEUS. अ ग्रेट ग्रीक वॉरियर, ग्रीक वॉरियर थे, ग्रेट ग्रीक वॉरियर थे. ही वॉज द किंग ऑफ इथाका. इथाका की स्पेलिंग लिखिए
Ithaca, Ithaca. In this poem, Tennyson has portrayed that though Odysseus has came to his homeland, Ithaca, after 20 long years of adventure, as he was engaged in Trojan War for 10 years. 10 साल तक हम सब जानते हैं कि ट्रोजन वॉर जो है वो 10 साल तक चला था. तो वहां से जो है वो वहां 10 साल तो ट्रोजन वॉर में लगे और उसके बाद में भी 10 साल तक उन्होंने जो है एक एडवेंचरस लाइफ जिसे कह सकते हो आप, वो उन्होंने लीड किया. और उसके बाद वो यहाँ पे रिटर्न किया, उन्होंने अपने घर पे आए हैं. सो ट्रोजन वॉर जो है वो 10 साल चली थी. ठीक है. हेलेन वॉज रिगार्डेड एज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी ऑन द अर्थ. हेलेन जो है उन्हें रिगार्ड किया गया था, कंसिडर किया जाता है, मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी कंसिडर किया गया था अर्थ की. एवरी मैन वॉन्टेड टू मैरी हर. देन Odysseus came up with an idea that whomever she marry, Greeks specifically will protect the couple. ठीक है. Hence Helen got married. Helen got married to whom? एंड देन हेलेन जो है उनकी शादी किससे हुई थी? हेलेन गेट मैरिड टू मेनेलॉस. मेनेलॉस की स्पेलिंग आप लिख लीजिए, MENELAUS, मेनेलॉस, किंग ऑफ स्पार्टा. स्पार्टा के किंग थे, SPARTA, स्पार्टा. लेटर पेरिस, किंग ऑफ ट्रॉय, एबडक्टेड हेलेन. यहाँ पे पेरिस जो है वो पेरिस नहीं है, फ्रांस वाला पेरिस नहीं है. यहाँ पे पेरिस जो है उस एक बंदे का नाम है. लिखिए, आप नाम लिखिए. पेरिस जो है वो कहाँ का किंग था? यू कैन से ट्रॉय का किंग था. ठीक है. देन मेनेलॉस रिमाइंडेड एबडक्टेड हेलेन. हु एबडक्टेड हेलेन? या किंग ऑफ स्पार्टा, पेरिस. ठीक है. सॉरी, किंग ऑफ ट्रॉय. पेरिस जो है उन्होंने एबडक्ट कर लिया था हेलेन को. और देन मेनेलॉस रिमाइंडेड ग्रीक्स दैट प्लेज. Thus the Greeks marched to Troy. This led the great Trojan War, which goes 10 years. At last the Greeks pretended to give up because they weren't able to enter in the palace of Troy. Even after 10 years, so they left a huge wooden horse in front of Troy palace. The people of Troy took this horse as the agreement sign from the Greeks. So they pulled this horse inside the place. Later at midnight, the 20 Greek warriors jumped out of the wooden horse and took hold of over the palace and back and took back Helen. यानी कि कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या शो किया कि ट्रॉय के जो लोग थे उन्होंने पैलेस का वो लोग they were unable to break the the huge, the massive gate. तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी जो है जिसे आप कह सकते हो, एक स्ट्रैटेजी लगाई उन्होंने एक हॉर्स जो है, एक वुडन हॉर्स जो है उसे उसके अंदर जो है 20 ग्रेट वॉरियर्स को बिठा दिया. और ये एक सिंबल बन गया किसके लिए? ट्रोजन पीपल के लिए, कि शायद वो लोग क्या करना चाहते हैं, अग्रीमेंट करना चाहते हैं, पीस स्टैब्लिश करना चाहते हैं. और उन्होंने उस हॉर्स को अंदर डाल लिया. और मिडनाइट में वो जितने भी वॉरियर्स थे, ग्रेट वॉरियर्स, वो निकल के बाहर आ गए और उन्होंने अटैक कर दिया और हेलेन को जो है उन्होंने वापस ले आए. ठीक है. आफ्टर दिस, ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यूलिसीज की ऑब्वियसली आप यूलिसीज पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वाज ट्रोजन वॉर. ट्रोजन वॉर थी क्या? तो ये थी ट्रोजन वॉर, ये रीजन था ट्रोजन वॉर का. ठीक है. हेलेन जो है वन ऑफ द कॉज ऑफ हेलेन की ब्यूटी जो है वो कॉज था ट्रोजन वॉर का. आफ्टर दिस यूलिसीज, और यू कैन से Odysseus had suffered for 10 more years due to the curse of the sea god Poseidon on him. Okay. Ulysses is a dramatic monologue. Ulysses जो है वो एक dramatic monologue है. It has been written in blank verse. Blank verse में लिखा हुआ है. Although Ulysses has came back to his hometown after a long period. क्योंकि 20 years का टाइम जो है ना वो कम नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत काफी लंबा टाइम होता है. ठीक है.
but he finds everyone unfamiliar to him here. He says that there is no profit in being an idle king and sitting near the fireplace with his wife Penelope. Penelope जो है वो किसकी वाइफ थी? यूलिसीज की. ठीक है, Penelope, Penelope, who has also became aged now. It also seems useless to him the allotment of rewards and punishments for his subject, as he considered the laws which are enacted for his people are not appropriate for them. Okay, thus he calls these laws as unequal, because these people feed themselves and sleep and do nothing except this. Thus he find their life. Whose life? His subjects life, है ना, लाइफ वेरी बोरिंग एंड रिपीटेटिव. ओके, मोनोटोनस जिसे आप कह सकते हो. देयर इज नो चार्म एंड इन देयर लाइव्स, hence these people lead monotonous life according to him. Moreover, his people don't even know him. It clearly indicates that this monotonous life is frustrating him, as he is not relating with his own people, neither they do. And he has become so habituated of adventurous life that he says that he can't rest from travel. He will enjoy his life to its last drop. Thus he wants to live his life fully. Then he says that he has enjoyed his life greatly and also suffered greatly with those people or comrades who loved him, and sometimes alone. He has faced challenges of unfavorable weather like scudding, drifts and storm, such as heights during his journey, but was always happy in every circumstances. He even says that everybody knows him very well, as he wandered everywhere with a hungry heart to gain knowledge. Thus he is the symbol of the thirst for knowledge or adventure, you can say. Further he talks about his past experience. He says that he has seen a number of things in his life. He has seen and observed various cities of men and their cultures, climates, council and governments, and learnt a lot from wherever he travelled. People whom he met never regarded him as little, but they respected and honored Ulysses. He further describes his experience during Trojan War in Troy, where this battle was fought. The hardships of battle even delighted. Okay, यानी कि hardships जो होती थी war, even war की भी, वो भी उसे delight करती थी as compared to this monotonous life. Okay, thus everywhere he was identified as the man who has a quest for knowledge. All those experiences from which undergone has now became the part of his life. He says that all his experiences is an arch. As he reaches to end of an arch, he finds another one which is shining and beckoning him to resume his journey. Because the world is endless, there are number of things to explore, yet hence there is no end of knowledge. Thus he says the margin of the untraveled world is faded, as we all know there is no particular end to gain wisdom. As one shifts further, the margin starts vanishing. Even one life is not sufficient to know everything. According to him, it is very dull and tiresome to pause or to make an end in the life. Then he uses a metaphor. Metaphor use करते हैं as he compares himself to a sword. As a sword becomes rusted when it doesn't come in use, in the same way he has become useless as he is sitting idle in the house. यानी कि कहने का मतलब है, वो बोल रहे हैं कि जब तक एक स्वॉर्ड जो है जब तक यूज आती रहती है तब तक वो एकदम यंग रहती है, और यू कैन से कि एकदम दूसरों को के ऊपर अटैक करने के लिए वो एकदम परफेक्ट होती है. लेकिन जैसे आप उसको सिर्फ रखे
करके रखोगे, उसको यूज नहीं करोगे तो वो रस्टेड हो जाती है। वही चीज जो है यूलिसीज कह रहा है कि मैं यहाँ घर पे रह के मैं भी क्या हो जाऊंगा, रस्टेड हो जाऊंगा, यूजलेस हो जाऊंगा। He feels there is mere existence of him in Ithaca. He is enjoying his life. For him, if the God will bestow him many more lives, they will also be too short or little for him. Then he talks about his own life, says, now it only little remained as he is becoming old day by day, and how the death is near, or you can say very close to him. Though the death is approaching him, still every hour of his life is precious. He can seek something, something more even now. Maybe these hour will bring him now new things to learn. Okay, now new things to learn. Then he regrets, and he regrets, and he says that he is ashamed of himself, that he has wasted three sons यहाँ पे sons है, which refers 3 years of his life in Ithaca, as he lived only in doing domestic or repetitive life during these years, but still now his aged spirit has great desire to seek knowledge, just like a sinking star beyond the unbound of human thought. So this is the explanation of the poem. हमने यहाँ तक देख लिया। अब जो टेलेमेकस की वाली जो आएगी वो लाइन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि दिस इज माई सन, जब वो अपने सन को इंट्रोड्यूस करेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो जो है वो 16 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेटली हो चुका होगा, तो इसलिए मैं जो है इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी इस पोम का। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद रिमझिम किंजरिया। थैंक यू वेरी मच।